चलिए, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है नारद न्यूज़ के। आई थिंक अब तो कितने हो गए यार, 7th एपिसोड पे होंगे हम। आप लोगों का साथ बना रहा तो आगे आगे और बहुत आएंगे। एक्चुअली अभी तक कोई किसी ने देखने शुरू नहीं किए हैं तो थोड़ा तो दुख हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पहुँच जाए लोगों तक, क्योंकि ये वाला मैं काफ़ी दिल से कर रहा हूँ। अभी तक तो था कि चलो ट्राई करते हैं कि यूट्यूब पे लाइव करना होता क्या है। चलो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट। बट जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ ये एक्चुअली आई एम क्वाइट इन्वेस्टेड इन दिस टॉपिक। एंड मैंने आज के लिए सिर्फ यही एक टॉपिक लिया है, कनाडा का बजट जो निकला है अभी, लिबरल गवर्नमेंट का जो आया है। एंड आई एम गोना ट्राई एंड गो ओवर 23 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा, बहुत सारे विजुअल्स, ये सब डला हुआ है उसमें, तो हम कोशिश करेंगे एक एक के ऊपर जाएं। एंड वेर एवर पॉसिबल आई विल ऑल्सो प्रेजेंट सम काउंटर डेटा। एंड अगेन मैं आपको विजुअल्स के थ्रू ही दिखाऊंगा। अभी मेरे एक्चुअली सोर्सेज अपडेटेड पूरे नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैंने एक्चुअली बजट का डॉक्यूमेंट तो डाल ही दिया। ये तो आप गूगल में सिंपल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मगर अभी अभी जो मैंने थोड़े बहुत इधर उधर से और लिए हैं और आर्टिफैक्ट्स, वो सब मैंने अभी सोर्सेज में नहीं डाले हैं, बट वो मैं डाल दूंगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट में रखे हुए हैं, वो टाइम नहीं मिला इनको एपीए में करने का ये सब। एक्चुअली एक्चुअली अर्लियर इन द वीक मैं बहुत बीमार पड़ गया था। अ, आप सबकी सूचना के लिए, फ्लू शॉट लेने के बाद भी फ्लू हो सकता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ओ फ्लू शॉट लिया तो अब रेजिडुअल जो थोड़ा वायरस होता है इट कैन फ्लेयर अप एंड आपको थोड़ा फीवर हो जाए। नहीं नहीं, मुझे एक हफ्ते बाद हुआ। तो घूम फिर के किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचा। एंड उसने बोला यार देखो, अब तुम्हारा गुड लक आ गया तो आ गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आफ्टर टेकिंग द शॉट ऑल्सो, अगर आपका वायरस ज़्यादा जल्दी म्यूटेट हो गया तो फिर आपकी चांदी ही चांदी। तो एक्चुअली वीकेंड तो बहुत ही बेकार गया था। तो जो जेडी के साथ पॉडकास्ट प्लान किया था स्पाइसी स्पेक्ट्रम पे, मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने बोला यार ब्रो आज नहीं हो पाएगा। अब हमने सोचा था आने वाला वीकेंड करेंगे, अब अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाएगा। इस बार उसको कुछ काम आ गया है। एनीवे वील बी बैक ऑन दैट चैनल इन 2 वीक्स, हमने डिसाइड तो कर ही लिया है। अभी के लिए जस्ट लेटिंग एवरीवन नो कि हाँ थोड़ा बीमार था तो पूरे हफ्ते आई कुडंट। वही है, आप फिर मंडे ट्यूसडे अगर ऑफ ले लेते हो, फिर वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे इतना काम होता है कि ये जस्ट लाइक कि यार अब ये बस ख़त्म हो जाए वीक। तो आज मैंने सुबह प्लान कर लिया था कि मैं बात करूँगा बजट पे। आए हुए तो 2 दिन हो गए हैं। पहले सोचा था कल करूँगा, बट अब आई कांट फाइंड द टाइम यस्टरडे। वेरी 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 एग्जॉस्टेड। वही है कि ऑफिस जाते हो 1 घंटा ट्रैवल टू एंड फ्रो में, तो 2 घंटे तुम्हारे अगर उसी में जा रहे हो, फिर तुम 8-9 घंटे काम कर रहे हो, तो फिर फिर बजट तो एनालाइज नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली लेट मी आज आई जस्ट पुट अप द बजट डॉक्यूमेंट एंड वील मोस्टली जस्ट यूज दिस व्यू बिकॉज ज़्यादा इजी है ये मुझे। अरे अरे, चलो विंडो में जाओ यार। I have to start getting used to this, but अच्छा, स्मॉल बी ये रहा। ओके। अरे बहुत ही बेकार लग रहा है। चलो इसको थोड़ा सेंटर में डालते हैं ऐसे। यार बड़ा अजीब है। चलो ठीक है, आज मोस्टली यही रहेगा। मन अगर अगर चाहिए होगा देन आई पुट माय फेस ऑन एज वेल एज नीडेड। बट बेसिकली यार अगर देखा जाए ये बजट
के नाम पे देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट ऑन दिस. एंड अगर मैं कभी ना कभी I'll talk a little more about my profession, but मेरा आप ये कह लो कि ये ऑलमोस्ट एक तरह से जॉब हैज़र्ड ही है कि जैसे ही मैं बॉयलर प्लेट देखता हूँ मुझे पता होता है कि यार ये इधर ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे बहुत सेक्शंस ऐसे लगे कि यार इसमें नया क्या कह रहे हो. एंड कुछ चीज़ें ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आई. If there is anyone in the chat later on when we get to those sections, or if anyone is watching this video later, please मुझे बताना कि what some of these items are and I will be calling them out. हाँ, चलिए शुरू करते हैं. तो अब पहले पेज पे we see कि okay they have a huge some sort of a commercial ship. मतलब ये ऑयल टैंकर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट क्रेन्स ऑन इट. इट्स अगेन ऑब्वियसली इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ कार्गो शिप. एंड ये जो आप साइड में देख रहे हैं इसमें कुछ ये दिस इज़ वन ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स लैंग्वेजेस, मे बी द इनुइट लैंग्वेज, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट का कोई पोर्ट लग रहा है जिसमें, बिकॉज यू आर सीइंग ऑल दिस आइस ऑन द ओशन एंड व्हाट नॉट. सो it's probably this is probably the Inuit language. I can't remember what it's exactly called, and if there's anyone from the indigenous community watching this, I'm sorry, I don't necessarily know. So देखने में तो ऐसा लगता है कि चलो मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, किसी ना किसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी. तो चलिए लेट्स सी how much will this document hold up to that. मैंने एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ा है अभी तक. I've gone through the first 10 odd pages. Mixed feelings है मेरी. तो चलिए आगे जाते हैं. तो मैंने 2 पेज व्यू डाल रखा है. आई थिंक इट जस्ट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग. अगर आप लोग को चाहिए कि सिंगल पेज का तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट. मैं मॉनिटर कर रहा हूँ. बट चलिए टॉप से शुरू करते हैं. ये जो लेफ्ट में ऑब्वियसली दिस इज पेज नंबर 2. More than 75% of our actions this year are to respond to significant global economic shifts. Yes, this year has had more significant economic shifts. I overall like the approach on this, on how they have tried to sort of split this up. कह रहे हैं चलो 42% is protect Canadian sovereignty, which means investing in defense, tariff response, and building a stronger economy. My only इसे आप कह लो my only ये परामर्श है मेरा. ये मेरा this is not a grouse, or this is not a negative thing I'm trying to say. What I'm just trying to say, give maybe more for whatever my advice is worth. Tariff response में आप क्या क्या include कर रहे हैं? I hope this goes beyond just saying तूने टैरिफ लगाया अब मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, राइट? कि आज जब आप टैरिफ रिस्पॉन्स कहते हो तो आई होप, जो मैं पहले भी लाइव्स में बोल चुका हूँ, आई होप डिवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, डिवर्सिफिकेशन ऑफ योर ट्रेड पार्टनर्स इज़ अ बिग ऑब्जेक्टिव हियर. बिकॉज आज किसी ने टैरिफ लगाए हैं, कल को शायद वो हट भी जाएं, परसों वो शायद वापस आ जाए, कोई और लगा दे. तो ये कहना कि तूने टैरिफ लगाया अब मैं भी लगाऊंगा, ये एक बैंड एड है. ये कुछ दिन चल जाएगी. जैसे आप सेफ वे में जब मैं जाता हूँ यहाँ पे, आप चूरन बेचते हो, बाय लोकल, बीसी, ये वो, ठीक है लोकल खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, बट कब तक चलेगा? अगर लोकल का भी प्राइस लोकल के नाम पे ही बढ़ते जाएगा तो मैं कभी ना कभी तो बोलेगा ना यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर यूएस से आया है. तो ये एक बैंडेड है. आई होप कि टैरिफ रिस्पॉन्स इंक्लूड्स
all these other things which are more longer term solutions to make the economy more resilient to any such things in the future. Because as we are seeing, and this is not just US का president कौन है, but और कहाँ पे क्या war हो गया, but we are seeing from 2014-15 onwards, we are going through one roller coaster after the other, starting from, the whole Crimea thing that happened between Russia and Ukraine. अभी मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, but all I'm saying is कि एक के बाद 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 एक आ रही हैं चीज़ें, and the number of scenarios you can face has become almost exponentially larger, and the variability between those scenarios has also increased. तो आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Now it is possible, and this would be something worth looking into, is it only because आपको न्यूज़ जल्दी मिल जाती है, शायद पहले भी ऐसे ही होता था, या is it because we are going through a time, of accelerated changes, something fundamentally has changed in the human psyche, human society, that it's just moving a lot faster. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तो खैर बहुत ही ज़रूरत है. इन्वेस्टिंग इन डिफेंस, व्हाई नॉट, डेफिनेटली. ये जो मिडिल क्लास टैक्स कट है, आई वांट टू सी कि कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि टैक्स कट तो बहुत लोग ऑफर करते हैं, होता नहीं है. लाइक ये तो कहने की बात हो जाती है. नाउ कैंसलिंग द कंज्यूमर कार्बन प्राइस, ये आप इस पे स्पेंड क्या कर रहे हो? हाउ इज दिस? आई वुड थिंक कि जब आप ये 10 बिलियन बोलते हो, दैट यू आर गोना स्पेंड दिस 10 बिलियन इन सम वे, this just means that you're not going to collect an additional tax. Are you counting that as something that that means those taxes are going to come down? I guess middle class tax cut, maybe it's about the government foregoing some revenue. So ठीक है, okay, you're trying to reduce the amount. अब ये मिडिल क्लास टैक्स कट में देखते हैं हाउ दे डिफाइन मिडिल क्लास. पता लगा 50,000 पे मिडिल क्लास कर रहे हैं तो फिर आधे से ज़्यादा देश को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 50,000 में आप जी नहीं सकते. छोटे से छोटे शहर में भी आप शायद नहीं जी पाओगे एक साल में. तो it'll be interesting to see how middle class is defined ultimately. Build Canada homes. I hope this is more around policy decisions on encouraging our private sector to start building homes rather than the government coming and saying hum building lagayenge. It doesn't go anywhere because everything we have seen मतलब पिछले 10 साल से बहुत चीज़ें गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है. सो I hope they stay out of actually building the homes. They focus on the policies that allow faster building of homes. आप अपने zoning laws बदलो. आप थोड़ा एक्चुअली अगर मैं बोलूँगा कैपिटल लूज करो, देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कैपिटल लूज करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. सो आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड आंसर टू दिस, बट डेफिनेटली जोनिंग लॉस तो बदलने पड़ेंगे. दे टू टाइट एंड a lot of the building of a new building, condos ho, single family homes or townhomes or, I think there was some ridiculous number that has made the rounds, like 60% of all the cost that goes into building a home is all going in permitting, government permitting. So I hope that's being seriously looked at. If the government is going to try and build homes and then come up with a nahi hoga yaar. मतलब मैं अपना बहुत सुंदर थोपड़ा दिखाता हूँ इस बात पे. Government should not be in the business of doing business. Government should be in the business of governing the country. Free up the system so that people are motivated
to take entrepreneurial risk. Some will succeed, a lot will fail, but eventually you'll have a more robust economy. मैं अगेन ये मेरा परामर्श है कि आप खुद बिल्ड ना करें, आप पॉलिसीज ऐसी बनाएं ताकि अपने आप और घर बने। बाकी तो अब टाइम ही बताएगा इस पे। फिर यहाँ पे डाला गया है स्ट्रॉन्ग फिस्कल पोजीशंस enables us to respond to global challenges। आपने नेट टू जीडीपी रेशियो इन G7 सबसे कम बता दिया, ठीक है, फेस वैल्यू पे ले भी लेते हैं। व्हेन वी गेट टू सम स्पाइसियर स्टफ, let me actually open up some of the other items that I had prepared for today। Actually, ठीक है, आपने नेट टू जीडीपी तो बता दिया, बट एक मिनट, चलो इसको खोल के देखते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये देखें कि सेंट्रल टेंट, चलो ट्राई करते हैं इसको। लेट मी सी इफ आई कैन शो दिस। इस चार्ट का आप क्या बोलेंगे सर? ये था 2020, ये तो कोविड का साल था, एंड उसके बाद से तो द ट्रेन हैज जस्ट नॉट स्टॉप्ड। आई वुड गिव देम क्रेडिट कि ठीक है, 21 में एकदम से बहुत ज़्यादा डेटा आया, कोविड, नो डाउट, बट उसके बाद से द increase has decreased, the rate of increase has decreased, but there's still a lot of work to be done यहाँ पे, right? And अब मैं आपको मैक्रो ट्रेंड एक और दिखाता हूँ। चलिए, कनाडा पर कैपिटा जीडीपी, चलो इस पे तो बाद में आएंगे। Okay, let's go back to the budget for now then, right? तो ठीक है, आपने एक अच्छा सा स्टैट दिखा दिया है, इसको हमने फेस वैल्यू पे मान भी लिया। टू मी दिस एक्चुअली रिंग्स अ वेरी स्कैरी बेल, बिकॉज इसमें है कि ये डाला इसलिए क्योंकि अगर हम अपना नेट डेट टू जीडीपी बढ़ा भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कि यार डेफिसिट तो चलेगा, बट आप एक तरफ कह रहे हो कि अगर रिड्यूस स्पेंडिंग, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप डेफिसिट या आपकी नेट डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, देन दैट्स अ लिटिल counter, or that's just countering what those are two contradictory statements essentially, right? So yeah, it left me a little confused। एक तो आपने net debt लिखा है, net debt is basically subtracting cash and cash equivalents। तो जो आपकी नियर टर्म है वो आप सब्ट्रैक्ट करके फिर आप डेट बताते हो, तो ठीक है, दैट्स अ स्मॉल, आई थिंक इट्स ओके, ठीक है, आपने ऐसे नेट डेट के बेसिस पे अगर किया है तो। ग्रोइंग आवर इकोनॉमी बाय स्पेंडिंग लेस टू इन्वेस्ट मोर, ये अपने आप में, अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट मच, बट आई जस्ट गो ऑन द ग्राफ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डेफिसिट are going to increase to 100% of deficit, let's say 2028 2029, that's the target। and day-to-day operating spending, so that's the federal government spending, will go down as a percentage of deficit, it will be zero। So they're saying that capital investments will make up all of the deficit, ठीक है भाई। Making generational capital investments to build Canada strong, 280 billion over 5 years to build new infrastructure project and empower। On a cash basis, this represents 450 billion। Now, if there are any accountants who ever watch this, please let me know कि यहाँ पे cash basis क्या है, because from what I understand in accounting, there are two ways to record a inflow of money: accrual versus cash। Now if someone says to me, and I'm a business owner, someone says to me
कि भैया आज आप मुझे सर्विस दे दो, मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो आप आज वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, बट आप अक्रूवल अकाउंट में करोगे। और जब 2 दिन बाद मेरा कस्टमर मुझे पैसे दे देगा, फिर मैं उसे अक्रूवल से घटा के कैश बढ़ा दूंगा। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, मुझे कुछ मिला नहीं इस डॉक्यूमेंट में। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट आई एम मिसिंग, अदरवाइज टू टू माय brain this is not adding up. In fact, it's almost a difference of, well, 80%. So on a cash basis this represents 450 billion. मतलब represent क्या, 280 billion है तो मतलब 280 billion ही है ना इसमें। how can it represent 450 billion? Are you talking about the downstream effects that it has, कि जैसे आपने $100 इंजेक्ट किया इकोनॉमी में तो उसकी $80 की सैलरी गिनते गिनते गिनते, it has a multiplier effect when you count GDP. Maybe they mean that, but again, they're not necessarily calling that out. And this is 5-year horizon, billions of dollars accrual basis. तो आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, ऊपर आ गए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने देख लिया। Global economic growth has slowed. GDP advanced economies 1.6%, nothing new. मीटिंग द चैलेंज इन एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसमें भी कुछ ज़्यादा मतलब क्या, ये फर्स्ट न्यू यूएस टैरिफ, फर्स्ट कोविड, मतलब ठीक है। आई थिंक आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग बीइंग फैसिशियस, बट आई डोंट नो व्हाई। एक तो ये वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, मतलब व्हाट्स द यूनिट ऑन द लेफ्ट, राइट? ये क्या मेजर कर रहे हो? वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स मतलब ये these type of sort of qualitative descriptions of seemingly, I almost think what is this quantity? Like when you say uncertainty, what do you mean by uncertainty? Above a certain percentage of tariffs, you already know you are not competitive. उसके ऊपर फिर कोई भी वो नंबर हो, इट डजेंट मैटर। जैसे इंडिया हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि 50% पे हम तो 20% पे भी कंपेटिटिव नहीं थे। आई थिंक मोटा मोटा दे लाइक कि ओके हम 20-25% पे भी कंपेटिटिव नहीं थे, तो उसके ऊपर ज़्यादा सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे अब तू 50 लगाओ, 100 लगाओ, 150 लगाओ, 200 लगाओ ना। एक जगह तो आप कह रहे हो कि आपका टैरिफ के कारण अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गया है, बट दूसरे ही विजुअल में यू आर सेइंग 85% ऑफ कनाडा यूएस ट्रेड इज टैरिफ फ्री। तो भाई आपके लिए इतना प्रॉब्लम थोड़ी है फिर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू। एंड फिर आप लिख देते दिस इज आवर टाइम टू बिल्ड कनाडा स्ट्रांग। आई मीन इट्स ऑलवेज अ टाइम टू बिल्ड कनाडा स्ट्रांग। नो व्हाई दिस टाइम? लाइक अभी तक स्ट्रांग बिल्ड नहीं करना था क्या? मतलब वो स्टेटमेंट का मुझे प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा है, बट अगेन मे बी देयर समथिंग आई एम नॉट सीइंग हियर। एक तो आप अनसर्टनिटी के नाम पे फिर बढ़ा चढ़ा के आप एक कोई नंबर दे दो। चलो मान भी लिया दैट इट्स एग्जैक्टली करेक्ट, दैट द अनसर्टनिटी वी आर फेसिंग टुडे इज 90,000 balloons. I don't know. But फिर आप कह रहे हो while 85% of our Canada exporters are the lowest average US tariff of any country, although some sectors remain deeply impacted, of course. But फिर ये ऊपर के चार्ट का क्या मतलब है अगर आप बोल रहे हो कि मोस्टली वी आर ओके? 85% इज मोस्टली, मेजॉरिटी मतलब वी आर ओके। ग्लोबल टैक्स आप कह रहे हो कि क्या है कि यूएस ने ऑन एवरेज 17% लगाया है, कनाडा पे 5.4% ही लगाया है। तो फिर समस्या कहाँ है? आर प्लान, अच्छा नहीं, चलो। Canada can achieve its ambition. यहाँ पे भी again lot of boilerplate. Canada and Germany are the only two G7 economies rated AAA. ठीक है यार,
तुम I agree कि Canada and Germany are the only two G7 rated AAA rated economies, but आपके bonds पे चलिए देखते हैं Canada government bond yields, right? Okay. Canada 5-year government bond 2.695% दे रही है. आपका yield curve upward sloping है and it's gonna go up. Canada 30-year government bond as of today is projected to yield 3.615%. US Treasuries 30-year yield. US 30-year yield आपको दे रही है 4.68 4.7%. तो ठीक है, it looks like because of the uncertainty US 30-year Treasury is yielding more than the Canadian 30-year government bond, which is 3.615%. This typically implies that there's less confidence in the US government. That's why the investors are demanding more yield. It's being deemed more risky. But we also have to remember that the size of the US economy is about 30 trillion, 29 point odd. Canada's is 2.1. 15 times का differential है for a population differential of about 10 times, maybe slightly more. Okay. Number 1, most educated workforce in the world. Source OECD. So this needs to be taken with a pinch of salt, because a lot of the times the education that you may have, especially in immigrants who come, yes, they have a degree, they have a piece of paper, it will ratify that they have studied something, but again the quality is just not up to the mark. मतलब quality नहीं होती है वो, and ये हमें मानना पड़ेगा. तो ये नंबर 1 तो ठीक है, आपने सर्टिफिकेट ले रखे हैं. अब फिर वो ये कि कितने लोग इसमें से डिप्लोमा मिल में से निकले हैं वर्सेस कितने लोग एक नामी यूनिवर्सिटी से निकले हैं. अगर इतनी ही एजुकेटेड वर्कफोर्स है तो फिर डॉक्टर्स की कमी क्यों है इतनी ज़्यादा? शायद डॉक्टर्स की कमी भी नहीं है, बट मैं आपको पर्सनल इंसिडेंट ही बता देता हूँ जो अभी इस संडे हुआ मेरे साथ. व्हेन आई वाज सिक एज हेल. एक तो मेरी गलती थी कि मैं जिस क्लिनिक पे पहुंचा, जनरली जहाँ मैं जाता हूँ, आई डेंट रियलाइज कि वो संडे को बंद होती है. तो ठीक है, चलो मान लिया क्लिनिक संडे को बंद है. फिर मैंने देखा चलो एक और वॉक इन क्लिनिक में जाते हैं. तो मैं वॉक इन क्लिनिक में पहुंचता हूँ, वो बोलते हैं वॉक इन क्लिनिक वाले कि हम वॉक इन पेशेंट्स नहीं लेते हैं. इस क्लिनिक का नाम है केंजिंगटन क्लिनिक, बर्नबी में है. मैंने नाम ले लिया. एक वॉक इन क्लिनिक वॉक इन पेशेंट्स नहीं लेती है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरली देयर फॉल्ट आल्सो, बिकॉज उनको इतना ज्यादा लोड है कि उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए अपने. तो ये नंबर 1 मोस्ट एजुकेटेड वर्कफोर्स क्या कर रही है? आई विल गो बैक टू ले दे के ट्यूसडे को मेरी नॉर्मल क्लिनिक पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला. बाय द वे दैट्स अ 30-minute ड्राइव फ्रॉम माय हाउस, क्योंकि ये वैंकूवर के जो सटा हुआ एरिया है वहाँ पे तो कुछ ढूंढने में मतलब ही नहीं है. मैं लैंगली जाता हूँ एक क्लिनिक हमेशा. तो किसी तरह से टाइलेनॉल ले के अपने आप को चलो इतना हो गया है कि चलो चेक दे के आते हैं. तो मैं पहुंचा उधर. अब फाइनली मुझे इस बार उन्होंने पूछा कि आपको फैमिली डॉक्टर चाहिए. मैंने बोला हाँ, सालों से चाहिए. तो हाँ, अब थैंकफुली मुझे और मेरी वाइफ को कनाडा में पहली बार फैमिली डॉक्टर मिल जाएगा. तो जब आप ये कहते हैं ना, ये ऑलमोस्ट
ये ऑलमोस्ट जले पे नमक छिड़कने जैसा है स्टेटमेंट। नंबर वन मोस्ट एजुकेटेड वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता ये एजुकेटेड वर्कफोर्स कहाँ पे है, क्या कर रही है, टिम हॉर्टन्स में काम कर रही है, क्योंकि भाई आप मुझे भी अनपढ़ मान लो, बट मुझे वो एजुकेटेड वर्कफोर्स डेली में तो नहीं दिख रही है भाई। एंड अब ये ओईसीडी का कोटेड डेटा है तो मानना तो पड़ेगा, बट ये मुझे दिख नहीं रहा है। मे बी द एमिग्रेशन रेट्स दैट द कंट्री has seen over the past 1.5 year or so. एक मिनट दोस्तों। Maybe the emigration rates that the country has seen has something to do with it. Maybe it means educated workforce in the world. Maybe it's passport holders wise, but maybe they don't live in Canada, so they are not actually actively contributing to the Canadian economy, even though, yes, you global tax and all the good stuff. ठीक है। Number two in the world for foreign direct investment, confidence. ये करनी का लेके इन्होंने कुछ बना दिया। इस पे तो एक चार्ट बनता है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ। नेट इन्वेस्टमेंट्स, यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई। चलो इसको यहाँ लेके आते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एक्चुअली मैं इस पे I'll just go into this view and then show it to everyone. यार ये बड़ा अजीब है, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसे पूरा दिख नहीं रहा है, बट I'll read it out. तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे जैसा दिख रहा है आप सबको, थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, बट दिखा कैनेडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कैनेडा, एंड ये जो बार्स है नीचे, दैट्स बेसिकली जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द टू एंड सेइंग कि ये है। ऑब्वियसली द सब्ट्रैक्शन इज सेइंग कि इन दोनों में डिफरेंस बढ़ रहा है, वो तो दिख रहा है हमें। अब आप 20, आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ ये है 2015 में हुआ, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, एंड देन इट हैज़ एंडेड अप वेयर इट हैज़। तो या तो अब नंबर टू इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस है ये, अगर एक्चुअली में ये इफ अगेन सॉर्ट ऑफ गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज शोइंग यू, क्या यार, बार बार इसे चेंज करना पड़ेगा। राइट, सो नाउ वी नीड टू डिसाइड कि कौन सा, you know, which how are both of these sort of, how are both of these points reconcilable? Because या तो आप नंबर टू इन द वर्ल्ड हो फॉर कॉन्फिडेंस, तो फिर आपका वो जो बार चार्ट है वो तो फिर घटना चाहिए, द बार्स शुड गेट शॉर्टर नॉट टॉलर। तो आपने कुछ डाल दिया है। अब ये कर्नी की रिपोर्ट है, सो ये प्राइवेट रिपोर्ट है। अब उधर यहाँ पे ओवीसीडी का क्यों नहीं आया, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, Canada is one of the top 5 producers of 10 critical minerals. Okay, good, that's great, but make sure you are actually gonna dig them out and sell them, because
टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ 10 क्रिटिकल मिनरल्स। तो ठीक है भाई, बट अगर आप उसको निकाल के बेचोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। एंड वी ऑल नो हाउ द Canadian landscape is whenever it comes to extracting the resources. So I hope this materializes. This is true. Canada has a lot of minerals. Canada is a resource rich country. But it is also true that every time some decent initiative is taken, a bunch of people come and say, no, a bunch of issues just pop up, social issues just pop up. And somehow everyone thinks that solving social issues will then lead to economic prosperity. No, not necessarily, not all the time. That need not be true. Number 2 country in the G20 for doing business over the next 5 years. ठीक है, we'll know in next 5 years how that is, because this is a totally future outlook statement जिसका अभी I'll give Canada something though over here. Establishing a legal entity here, the process is actually devilishly simple. मैं लिटरली स्काई ट्रेन में चढ़ा. फॉर पीपल हु लिव इन वैंकूवर आप मान लो कि, और फॉर पीपल I got on the sky train in downtown, and आते आते I had figured out how to get a company and everything. मतलब legal entity खोलना काफ़ी आसान है actually. ठीक है, अभी तक मैंने किया भी या नहीं है, but it's just literally आपको एक, there's a bunch of questionnaires that show up, and then you have a legal entity. So it's actually pretty easy. So I'll have to give Canada that, but taxes, मतलब फिर वही है, अगर आपको नंबर 2 कंट्री इन G20 ओवर द नेक्स्ट 5 years बनना है तो आपको भाई टैक्सेस का तो कुछ करना पड़ेगा. अपेरेंटली मिडिल क्लास के लिए रिलीफ आ रहा है, देखते हैं कब आता है और कितना आता है, क्योंकि चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ. ओके, दिस विल वर्क. सो अब आ रहा है टैक्स ब्रेक, देखते हैं कितना आता है, कब आता है और कितने लोगों को वो इम्पैक्ट करता है. बिकॉज दैट मिडिल क्लास, द वर्डिंग ऑफ मिडिल क्लास इज लाइक ओके, कितनों को मिलेगा यार. फिर ये बोल दे कि कनाडा तो अमीर देश है इसलिए 10% 15% इज ओनली मिडिल क्लास, अब सबको दे दिया. तो लेट्स सी. Budget 2025 reinforces Canada as the most tax competitive jurisdiction for new business investment in G7. Again, just let me know how we can reconcile that growing tall bar between the investment that's going in and versus the investment that's coming, going out versus the investment that's coming in. If we are amazing, right? क्या होता है कि डेटा में there are many ways to look at data, and then more often than not, if you mine enough data, then or if you do enough data mining, you can basically make it sing whatever you want. I have a much more colorful expression for this. A YouTuber I follow used it, but ठीक है यार, सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है मुझे, तो इसलिए अभी के लिए मैं रहने देता हूँ. Canada is one of the lowest deficit to GDP ratios. Yes, this is true. Actually, ये verify कर लिया है. तो ठीक है, आपका डेफिसिट कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितना अभी है उसमें भी जो सर्विसेज प्रॉमिस हो रही हैं वो तो मिल नहीं रही हैं. तो आई डोंट थिंक दिस इज ये जो इतने सारे डेफिसिट वाले विजुअल्स डाले हुए हैं, दिस ओनली फोरशैडोज टू वन थिंग कि भाई स्पेंडिंग बढ़ेगी. फिर वही हो जाएगा जो यूएस में बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम पे हुआ, बोल रहे डेट कम करो, डेट कम करो, डेट कम करो, भाई बिल में लिख दिया आप तो बढ़ जाएगी. यहाँ पे भी यही होने वाला है. आ गया हमारा, चलो, another very very beautiful bill. Global generational shifts, the world is fundamental shifts. Again, इसमें कुछ ज़्यादा मसालेदार था नहीं.
अरे नहीं सॉरी, ये तो पहले वाला ही है. ओके. Our plan to build, protect and empower Canada. Again, ये एक वेन डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं build, empower, protect. Okay. Again, numbers नहीं है इसमें ज़्यादा. It's just protecting Canadian sovereignty, empower, bringing down costs for Canadians. I like that. As a part of empower, building more affordable housing. Again, as I said, the government should be focused on the policy making, not necessarily building the housing themselves. And then spending less to invest more, I don't know what that means. Building a new economic security relationship with key partners. ठीक है, attract. I know Canada was on this. एक बार इसमें बात कर लेते हैं. Security relationship with key partners. So US is planning some sort of an iron dome or a defensive dome, and Canada, I know, wants to be a part of that, and Canada wants to be included in that dome. So I think part of that just is referring to that in sort of uncertain terms. Building one Canadian economy and catalyzing nation building infrastructure. I actually like this. One Canadian economy to me means they are trying to move towards a free trade agreement between the provinces, among the provinces. Interestingly, जैसे इंडिया में पहले होता था बहुत साल पहले, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या लगता था, just because you were crossing state lines. कनाडा में अभी भी ये होता है. So not all provinces don't have free trade among themselves. So a lot of the times provinces actually find it easier to trade with the states. Now that is not the case anymore, I think it looks like they'll be trying to move towards a free trade agreement among the provinces and the territories, so that the economy can be kick-started. And catalyzing nation building infrastructure. I mean, अभी चालू हो गया है कि pipeline बनेगी, minerals extract होंगे. So I actually like all these 3 points. Attracting world-class talent. Kuch time ke liye this will be challenging because obviously we are seeing a big push towards rejecting student visas. I'm not saying the country doesn't need world-class talent, but again, if you want world-class talent and you are saying, kya tha bhai? Number one most educated workforce in the world. Again, this is the inconsistency I'm talking about, right? एक तो आप कह रहे हो मोस्ट एजुकेटेड लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड, तो भाई आपको वर्ल्ड क्लास टैलेंट क्या चाहिए? इसका मतलब यही है ना, सारे बैठे हुए इतने सारे एजुकेटेड लोग हैं, आपको वर्ल्ड क्लास टैलेंट नहीं मिल रहा. आई मीन, फॉर एवरीथिंग सेड एंड डन, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली रियली गुड. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वेस्टर्न है, यॉर्क है, यूबीसी है, काफ़ी काफ़ी नामी जगह हैं. ये सब टॉप 50 में आ जाती हैं दुनिया की. सो अगेन, इतना अगर टैलेंट है तो फिर और वर्ल्ड क्लास, okay, I can see some logic to it, because even if you have, again, sorry, I forgot to mention Waterloo is another big one, but apart from these names, right, like अगर इतना ही आपके पास ग्लोबली अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फिर टैलेंट होना तो चाहिए. यू शुड जस्ट हैव इट डोमेस्टिकली. Maybe what they are saying is, okay, we need to attract more people, more world-class talent, so that the pace of innovation can grow. I would say, okay, it's a fair point to put, but it's a little contradictory to saying, okay, I have the number one most educated labor force in the world, but then I still need to keep attracting world-class talent. You should ideally be having that within the country if you are the number one most educated. ठीक है, I'll still let it go. मतलब चलेगा. There is a way that both of these can be true, and they need not be treated mutually exclusive. So spending less to invest more. Finally, we see some sort of a quantification of that. Government itself must, by right sizing, cutting red tape. This is music to my ears. I hope if there's one statement here that materializes 100%, it's this. Not one sentence, but maybe, I guess, one paragraph. Government itself must become
much more productive by right sizing, cutting red tape and wasteful spending, and adopting AI at scale. There is some news that Microsoft is going to put up a huge data center somewhere in Ontario where all these AI services that they have in the Azure stack will be made available in Canada. Like the models will be sitting in Canada, which will then allow any queries, any data that is consumed by these models to be entirely just processed in Canada. Right now, even though the data is sitting in Canada, it has to make a trip to the US because the model is sitting in the US. It gets analyzed, the response comes back. And a lot of the times, government doesn't want that, which is fair. So this paragraph is music to me. Unfortunately, yes, some people will lose their jobs. I'm not going to sugarcoat it. And it's not just the government, right? Government अगर cut down कर रही है, अगर कोई कंपनी है जिसका बहुत सारा क्लाइंटल गवर्नमेंट का है, so it will have a downstream impact on some private sector also. There's a lot of companies that do contracting work for the government. They will also face the music. And मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि I feel मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है फिर. But overall, the need of the hour at a country level is that, okay, the government needs to right size, red tape needs to be cut, and wasteful spending needs to be stopped. So, brilliant statement here. Like, hats off. It's if it is followed through to the end, then this is amazing. In fact, we are slowing growth in direct program spending from 8% to under 1%. Amazing. So that means they are. See, I like it when it is quantified like this. That right now our spending is growing at 8%. We are going to bring it down to under 1%. This is good, having a number there, so that at least we can track it and we can say, okay, how much of that promise was met. And it shows that the government is serious. They are showing accountability. इसलिए वो ऐसे quantify करके दे रहे हैं. Capital investments, historical projected. So it's going to have, we are going to see a massive increase in 2026, 2027 fiscal May. 27, 28, 28, 29, 29, 30. Okay, so yeah, 2026 to 2027 May we'll see a very big jump. And we'll see basically an equal jump in 2025 to 2026 as well. So basically next 2 years are going to be critical when it comes to capital investments. I think that's the key takeaway from this chart. चलिए आगे जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Okay. A new office of digital transformation will lead the adoption. This is a double-edged sword. What will happen is Office of Digital Transformation. So using AI is good. I still advocate it. Government should use AI, but it is also a little scary. Ki, okay, they'll have so much access to private citizens' data that there will be privacy concerns. There will also be concerns around, okay, can you just shut me down just because, जैसे मैं YouTube पे बैठा हूँ, मैंने कुछ बोल दिया, कल को मेरा चैनल बंद हो जाएगा क्या? खैर वो तो अभी भी हो ही सकता है, उसके लिए AI की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है. But of course this will have very mixed responses from across the country. But overall, I think this is a step in the right direction. Digital transformation is something the government desperately needs. कनाडा में आज भी जब आप वर्क परमिट लेते हो तो वो आपको एक पेपर देते हैं. अगर वो पेपर चला जाए तो अच्छी बात है. That's a part of digital transformation, but again, it's not AI, but not all digital transformation needs to be AI, right? It can be non-AI as well. So it can be a plain vanilla, let's put in a database instead of an Excel file. That's also digital transformation. So I'm very clear. I advocate this. Overall, I do advocate this, provided that there are safeguards in place to sanitize the data
And then there are safeguards in place in terms of law on what the data can be used for. Of course, I think across North America, all the websites, and across Europe, all websites, all companies do a pretty good job of letting you know, okay, which type of cookies do you want to allow vis-a-vis that product or service. So the government will probably take a similar approach. So overall, I'm okay with this. I like it. um यार मोर टैक्स पेयर डॉलर विल गो टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. भाई तुम जितने ले रहे हो उसी में प्लीज काम चला लो. बहुत टैक्स जा रहा है. आई एम नॉट इंटरप्रिटिंग दिस एज टैक्सेस गोइंग अप, जस्ट ऑन द रिकॉर्ड मैं बस अपनी थोड़ी संवेदना प्रकट कर रहा हूँ कि यार बस टैक्स बढ़ाना मत, ऑलरेडी बहुत है. प्लान ऑन टू फिस्कल एंकर्स, ठीक है. some I think these two statements are consistent with each other, balancing day-to-day operating spending and then maintaining a declining deficit. So yeah, these two are internally consistent with each other, so it's good. Budget 2025 projected deficits. um Day-to-day operating deficit. So it looks like the number on the top is the total deficit, and of course for this year the operating deficit will be the greatest. Now this, from this year to next year, that's a huge drop. 78. ये जो आप दिखा रहे हो डे टू डे ऑपरेटिंग डेफिसिट, मतलब यू आर लिटरली, ये एग्जैक्ट नंबर दिया नहीं हुआ है, बट मैन अगर आप, they are literally saying we will bring it down to a fourth, a quarter of whatever this number is. मतलब अगर मोटा मोटा मान ले 78 बिलियन है, और just doing a बोटी कैलकुलेशन, मेरा फेस आईडी चल जाए यार, ऐसे तो मत कर. हाँ, तो अगर 78 बिलियन टोटल डेफिसिट है, मान लें ये जो ब्लू लाइन है दैट इज अबाउट 40% ऑफ द होल, सो वील गेट 0.4 ऑफ 78, 31 बिलियन का ये जो डेफिसिट है, अगर आप उसका 25% तक जा रहे हो, यू आर सेइंग यू विल ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 8 बिलियन इन 1 year, from 31 to 8, roughly speaking. Again, these are rough numbers. So अगर आप 31 minus 8 कर रहे हो, तो मतलब आप 23 बिलियन एक साल में घटाने की कोशिश कर रहे हो. Let's see. मतलब ये मैं पॉइंट याद रखूंगा, because I really want to see if this can be achieved. And there are, in my opinion, two implications for this. If this truly can be achieved, then there should also be some sort of an inquiry into how we even got there in the first place. अगर आप एक साल में इतना कम कर पा रहे हो, तो मतलब बहुत lackluster oversight रहा है इसका मतलब, right? And it should be investigated in one way or the other, I would personally say. Now the next big one would be from 2027 to 2028, then coming down to zero, and they are just completely going capital investment. I think that's slightly unrealistic, because how do you not have a day-to-day operating deficit? I guess you're saying day-to-day operating deficit, not operating cost, so it is possible. So we are saying that, okay, government will either be breaking even or making money. Okay, cool. Comprehensive expenditure reviews, 60 billion in savings over 5 years. Okay. Saving 1.3 billion annually. Okay, I'll just stick with this number, and then maybe a year or so from now we can review कि okay 60 billion में से कितना already save हो चुका है, कितना रह गया है, हमारा run rate क्या है, ये सब हम आके देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ें. Okay, public service versus Canadian population growth. I mean, I'm not interested in कि क्या हुआ है, because federal public service population, so since 2019 has grown at an unprecedented rate. So एक minute. So
Yes, I think none of this is none of this is surprising. Everyone knows all these numbers. यार fan बंद करें, बहुत ठंड लग रही है. चल. Hmm. Now expenditure review. Basically, obviously हमारी population एकदम से बहुत बढ़ी from 2022 to 2025. So we see that slight, the steepness of this line has gone up. So it's increasing at an increasing rate, if you will. And of course, the federal services just ballooned into something else. So right now we are here. Guess ये future looking को 2025 में बता रहा है, but it's okay. Oh, because 2025 का population data नहीं आया है. Looks like there has been some headway in reducing over this fiscal year 2024 to 2025, which is a good sign. And it will go down all the way in 2029 to about 110 billion, which is the current amount of debt. So ठीक है. Okay, consistent spending, less on government and more on Canada. ठीक है. Nominal GDP growth 3.8%. अगर आपका nominal 3.8 है, अगर आपका inflation 2 चल रहा है, then you're basically saying 2% real growth, which is fairly in line with what you would expect in an advanced economy. So ठीक है, I'll give that. Okay, growth in program spending will fall. Again, this is that statement that they had quantified. So right now it's above 8. They'll bring it down to 1. I hope this I feel is too idealistic. But again, ये budget है, ये proposed है. Let's see where it lands. If this truly happens, this is brilliant. If this truly actually happens, this is amazing. But let's see how much of it is actually achievable. Okay, our generational investments in housing, infrastructure, defense, and productivity and competitiveness will allow us to meet the moment. Fine. Again, housing 25 billion over 5 years. See, encourage the building of houses. I don't think you need to actually go ahead and build houses. वो government का काम नहीं होता है. So I hope this one can be looked at, is what I'm saying. क्योंकि 25 बिलियन में तो घंटा गवर्नमेंट से हाउसिंग नहीं बन पाएगी. नहीं हो पाएगा यार. मतलब 25 बिलियन में तुम्हें कितने कितने घर बनाने हैं, राइट? लाइक यार 25 बिलियन में अगर आप स्पेंड कर रहे हो घर बनाने के लिए, सो लेट्स डू अ क्विक कैलकुलेशन. 25 बिलियन ओवर 1 मिलियन, सो 0.1 डालता हूँ मैं. मतलब यार चलो ओके, make this easier for myself, which is saying कि मतलब अगर आप ऑन एवरेज मान लो एक घर की वैल्यू है 500,000, तो आप बोल रहे हो आप 50,000 हाउसेस बनाओगे. 50,000 50,000 नए हाउसेस का कुछ, I mean it's overall 50,000 new houses is not going to cut it. So I think we need in 250,000, maybe 300,000 a year for the next 5 years. So I would interpret this statement as okay, revamping zoning laws, incentivizing, maybe subsidizing builders and whatnot to try and build more housing. But yeah, I hope the government is not thinking of actually building houses on their own. Yeah, matlab, that's not going to lead anywhere.
चलिए आगे बढ़ें. डिफेंस एंड सिक्योरिटी हम देख चुके हैं. प्रोडक्टिविटी एंड कंपेटिटिवनेस. आई वांट टू सी व्हाट इज अ पार्ट ऑफ दिस, बट it's surely a nice it's a nice initiative. What it entails, not necessarily sure. Infrastructure, of course, Canada needs a lot more infrastructure for. Actually, overall, of course, Canada's population is not that much, but again, we are all concentrated in 4 or 5 dots across the whole country. And then those cities feel the strain. मतलब वैंकूवर में पीक टाइम में मुझे एक बार याद है, मैंने बस नंबर 25 ली थी यूबीसी से. मैं उस समय कमर्शियल ब्रॉडवे स्टेशन के पास रहता था, तो मैंने पीक टाइम में ली थी. फुल डिस्क्लोजर, मतलब वो बस, मतलब it's one of those buses which will stop at every little junction, right? उसका हर इंटरसेक्शन पे स्टॉप आएगा. ले दे के डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, 15 से 18. मैन 1 घंटे से ऊपर लगा. So at this point, I mean, if you're averaging 4 minutes to 1 kilometer, a little over that, then you definitely know infrastructure to chahiye. Vancouver, as being one of the major metropolitan hubs of Canada, actually doesn't have a highway that goes through it. मतलब हाईवे आती है, बर्नबी तक छोड़ देती है. मतलब विद इन वैंकूवर देयर इज लाइक 1 or 2 exits जो आपका they just sort of skirt the city, and then the highway will just go north. ओवरऑल इट्स फाइन, क्योंकि आप हाईवे रखोगे भी कहाँ, बट थोड़ी अगर एक आध रोड और चौड़ी हो जाती, इट वुडंट हर्ट. स्पेशली डाउनटाउन एरिया में पार्किंग का तो खैर भूल ही जाओ, बट डाउनटाउन में गाड़ी लेके जाने का ही कोई मतलब नहीं है. बट in general also it's very difficult to find. It's like, even a small city like Vancouver, we struggle because it's the third largest metropolitan area. Toronto तो भाई भूल ही जाओ. टोरंटो तो मैं ही, मतलब मैं जब रहता था तो मेरे पास ऑब्वियसली, आई यूज्ड टू लिव इन टोरंटो, सो माय कार वाज आल्सो इन टोरंटो. पता नहीं यार, वो मतलब अब मैं जाके टोरंटो ट्रैफिक देखता हूँ, आई एम जस्ट शॉक्ड. उतना नहीं था यार जब 2019 में मैं रहता था. इट वाज ठीक है, ट्रैफिक होता था, बट वो जल्दी से छट भी जाता था. बट अब तो इट्स क्रेजी यार. मतलब कुछ और ही हो गया है. टोरंटो तो खैर अब वो गार्डनर एक्सप्रेस वे ही फिक्स कर ले, बहुत बड़ी बात है. बट दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेलकम statement. 115 billion over 5 years. The infrastructure, yeah, we need it. um, बाकी आप रेलवेज में डालो, ब्रिजेस में डालो, रोड्स में डालो, of course all of that is much welcome. Okay. Let's see something. Building major infrastructure for 21st century. 5, 1937, 54. Okay, so this is the total number. 5 trade and transport infrastructure. 19 okay, 17 other. ये जब अदर लिखते हैं ना, फिर मुझे 37 अदर, मतलब यार थोड़ा. And this is a big number. This is the second largest number, and you're just classifying it as other. Then I'm like कि भाई, it would have been better to just have more categories maybe. Healthcare तो I don't know if healthcare is a purely an infrastructure issue, or just that your healthcare workers are having to spend too much time on administrative tasks. But I think just building more hospitals is not going to cut it. You definitely need more hospitals. I'm not going to deny that. But you also probably need to look at processes the staff has to follow, and then the amount of time they have to spend doing administrative work as opposed to attending to patients. So ठीक है, आपने लिखा है कि आप हेल्थ इनोवेशन करोगे, बट I would say the overall thing is healthcare is way more complex than just
building infrastructure. It's good to see it here. It's definitely a very positive thing to see it here, but it's also, I would say it's a lot more than that. Core public infrastructure, water, wastewater, transit. यार वेस्ट वाटर का है प्रॉब्लम कनाडा में, मतलब ठीक है अगर लिखा है तो होगा, which maybe there are maybe see I live in a bubble of sorts, so I won't say I know about, I can speak for all of Canada. I can speak for the major cities. I've spent significant times in the three biggest metropolitan areas, you know, Toronto, Montreal, Vancouver, but उसके आगे का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, so I won't comment. Maybe there are wastewater issues which I don't know, and maybe that's why. But again, it also says water, and then it also says transit. I actually love Canada's focus on transit. मतलब मैं यूएस में बहुत जगहों पे रह चुका हूँ. Obviously ट्रांजिट के नाम पे तो सिर्फ न्यूयॉर्क में ही है. LA has decent transit, but again it's a little unsafe. न्यूयॉर्क में you feel okay when you take the subway and everything. मुझे इतना unsafe नहीं लगा, and I know some New Yorkers are like यार इस, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ लाइन 1 लिया था और मैंने पाथ लिया था, तो वो सब तो मुझे ठीक ही लगा यार. बट कनाडा में ट्रांजिट इज़ गुड इन द बिग सिटीज़, आई वुड से. जो टोरंटो में है, जो TTC, द माई वे इन मिसिसागा, जो गो ट्रेन्स हैं, दे आर एक्चुअली pretty well functioning. I would say more subways are needed for a city the size of Toronto. मतलब टोरंटो का सबवे लाइन ऐसा ऐसा, बस एक ऐसा वी, ऐसा उल्टा ए लगता है. Obviously more subways needed there, but again I'm guessing कि if they're saying core public infrastructure which includes transit, so I hope expanding TTC is on that. And let's come all the way to the west, Vancouver में. I know that there are already TransLink के जो भी expansion projects हैं वो तो सबको पता ही है. What I would love to see as a part of the transit initiative is Vancouver area में especially West Coast Express का थोड़ा frequency बढ़े. And it should also be, it should be a daily operation. ये नहीं कि सुबह 5 बार एक डायरेक्शन में, शाम को 5 बार दूसरी डायरेक्शन में. Because sometimes मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है जो मैं बोलने वाला हूँ, बट हियर मी आउट. लाइक यार वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की सीट्स कंफर्टेबल है, तो कभी कभी आई ऑल्सो टेक द ट्रेन. मुझे तो मुझे 1-2 स्टॉप आना पड़ता है दूसरे डायरेक्शन में, बट इट्स लाइक कि ठीक है यार, सीट तो कंफर्टेबल है, बैठ के तो आते हैं आराम से. बट बट इन ऑल सीरियसनेस, it's a train that's used a lot by people who live in the outer suburbs of the area. So if they can have more if their commute can be reduced by a daily service, then by a service that's running the whole day, would definitely be much more beneficial. um and of course in Vancouver the one thing we need is SkyTrain going to the northern parts, North Van, West Van. अगर वहाँ तक SkyTrain पहुँच जाएगी, then the appeal of those areas becomes more. But of course, the drawback is obviously then the natural beauty that you just see as soon as you enter West Van, especially. That will take an impact. मतलब आप जैसी SkyTrain डाल दोगे, obviously लंबे लंबे टावर आने शुरू हो जाएंगे. लंबे लंबे टावर आएंगे मतलब अच्छे अच्छे व्यूज़ कम होंगे. बट आई थिंक देखो, अब जो लोग आ गए हैं वो तो रहेंगे कनाडा में. मे बी सम ऑफ देम विल इवेंचुअली गो बैक कि यार पैसे नहीं मिल रहे, जॉब नहीं मिल रही, ये हो गया वो हो गया. बट लेट्स अज्यूम 50% ऑफ ऑल द पीपल हु केम इन द पास्ट 3 years आर गोइंग टू स्टे बैक, एंड दे लीगली स्टे बैक. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कुछ इलीगल करेंगे, दे विल फाइंड अ लीगल वे टू स्टे, ऐसा नहीं है. बट But the challenge for the infrastructure is then to cater to those people. So you will need an infrastructure build boom, regardless of anything else. So, and of course, Vancouver will be one of the bigger cities to take that because it's the third largest metropolitan area. So I like the fact that, okay, 54 billion will now go into infrastructure. 37 other, thoda ambiguous hai. Maybe they could have just had more.
maybe a few more categories. I would have loved to see healthcare broken out, but ठीक है नहीं डाला अब चलेगा ओके हो गया. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनली 5 बिलियन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था बिकॉज if you want to increase your trade, you're going to need transport infrastructure. Very simple. Um, and you're going to have to open up your bloody seaports. It doesn't matter फिर उसमें कौन झंडा लेके खड़ा है, but you are going to have to allow more trade through the Vancouver port. You're going to have to allow more trade on the Halifax port, Montreal port. फिर ये सब हर समय नहीं चल सकता कि हम सी पोर्ट का एक्सपेंशन नहीं अलाउ करेंगे. अगर ये 3 मेजर नहीं अलाउ कर रहे हैं then you have to build another one which is a much larger cost, much huger cost. अगर वो वैंकूवर के पोर्ट को नहीं अलाउ कर रहे हैं, आई हाईली डाउट विक्टोरिया पे कुछ बन सकता है. एनीवेज विक्टोरिया पहुंचने के लिए यू हैव टू टेक अ ब्लडी फेरी, सो दैट जस्ट एड्स मोर एंड मोर चैलेंजेस. सो आई वुड से a little more is needed than 5 billion for trade and transport infrastructure. I can't comment much on indigenous communities infrastructure because I have no idea. Municipal infrastructure definitely needed. Now let's say supercharging growth, productivity and competitiveness. Okay, so super deduction. I like the sound of it. I don't quite understand what it means, but yeah, I like this. Emerging technology support, AI, quantum and electric vehicles. They have acknowledged quantum computing as something that is going to be a game changing technology. मैं अपने पिछले लाइव्स में भी ये बोल चुका हूँ कि जब तक क्वांटम मेन स्ट्रीम नहीं होगा तब तक AI में आपको जो प्लेटो दिख रहा है वो रहेगा. So I'm glad to see. Actually, this is very well thought out. I would say this is pretty well thought out. Regional economic development ठीक है चलेगा. Innovation support programs, which would mean encouraging startup culture, which is always a good thing. Canada actually has always had a pretty robust incentive scheme for startups. Actually, what gets Canada is एक तो यार यूएस के तुम बहुत पास हो तो हर समय लोगों को है कि यार अब मेरा स्टार्टअप थोड़ा चल गया मैं यूएस भाग जाता हूँ. दूसरा द वेदर डजंट हेल्प. मतलब इतनी ठंड होती है इन मोस्ट ऑफ द कंट्री कि फिर लोगों को लगता है यार अगर मैं समर के महीने 3-4 महीने यूएस में बिता रहा हूँ तो मैं अपना स्टार्टअप भी यहाँ पे एक्सपैंड क्यों नहीं करता. अब those are just twists of fate if you will. अब जब आप कनाडा का आप जियोग्राफिक लोकेशन तो बदल नहीं सकते. So it is what it is. But I'm glad that okay, innovation support programs is a high priority. Scientific research 27 ठीक है. Other tracks credits. I think it's just that अगर यार हमारे पास पैसे नहीं आए तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमने तो ठीक है जितना दे रहा था दे दिया. It's okay. Other tax, but seeing this number for supercharging growth, I like this. I think this is a great plan. Again, this is a plan. Let's see how much of it actually materializes, but I think the heart is in the right place. Okay. Let's get to this one. ये एनालाइज करते हैं दोस्तों. फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी. 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते. But I think we have gone over all the items of the budget. कल मैं लाइव आऊँगा and then what we can do is कि go over where this budget is in the whole political scenario, how close it is to being approved, etc. Okay. Canada is facing a steep housing supply gap, no doubt. Home building must nearly double from its current pace of about 280 to, okay, that's a good acknowledgement. The parliamentary budget officer estimates 290k homes would be needed to close the supply gap. Okay. GST for the first time home buyers under 1 million launching Build Canada Homes, a new federal agency that will
ठीक है, आई नो आपने जीएसटी वेव कर दिया अंडर 1 मिलियन. I actually want to see the impact on inflation. Now, when we see the official statistics, inflation has actually been under control. I feel that that's true because I'm also seeing the overall. मतलब हम एक साल से जैसे ग्रोसरीज खरीद रहे हैं एज अ मैरिड कपल, एंड हमारा बिल ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है पर वीक. इतना कुछ ज़्यादा बढ़ा या घटा नहीं है हमारा खर्चा. So I'm inclined to believe the inflation numbers, although there is a lot of content online which is saying कि यार ये inflation number में झूठ बोलते हैं, ये basket change कर देते हैं तो inflation कम आता है. Obviously, when I look at the gas prices, when I had moved to Vancouver about 2019, 2021, sorry, it was about 135, 140. Obviously in the years of high inflation, जब 2022 था, I saw it as high as 236 $2.36 to a liter. And अभी आज I think yesterday I saw it at roughly 153. तो वो पूरा ऊपर जाके ऑलमोस्ट वहीं आ गया जितना 4 साल 5 साल पहले था. So when they say that they're going to eliminate GST for first time home buyers, I hope it doesn't have too much of an upward pressure on inflation, because ultimately that's what decides the value of your dollar, right? क्योंकि अगर if everyone decides to get into a mad buying spree like they were, obviously the Toronto condo market has melted. मतलब I think 25% correction आ गया, if not even more. So, but that was bound to happen. The GTA region is huge, and वहाँ पे वही डब्बे डब्बे कॉन्डो के नाम पे बेच रहे हो तो भाई वो तो ठीक है. It was bound to it was bound to see it was bound to see its day of reckoning. Personally, in Vancouver, the correction has not been as drastic as GTA. I would say अगर आप मान लो टोरंटो में about 25% है तो वैंकूवर में about 15% है, because obviously the GVA region is much smaller, and यहाँ पे zoning laws maybe are even more strict. So यहाँ पे build करना और मुश्किल हो जाता है. But यहाँ पे भी yes, the new sales have reduced. I keep getting all these Instagram पे आते रहते हैं ना दिन रात, वही वही कब से वही कॉन्डो टावर्स का आ रहा है कि ये वाला ले लो ये वाला ले लो. मतलब बिक ही नहीं रहे हैं उनके घर. I think they used to have a 12-month allowance on the promotion period, like you could sell up to 12 months, and then you'll have to decide, do you want to keep the project, or you have to decide, do you want to pull the plug. But now they recently increased that to 18 months, so all these builders are allowed to keep promoting an unbuilt, like a pre-sale, an unbuilt building for 18 months before they even have to lay the first stone or something. So, or maybe they have to meet only a few minor milestones before they have to stop the promotional period. So I know it's suffering, but I also know जब मैं realtor.ca पे देखता हूँ कि यार जो roughly मैंने throughout the year prices देखे हैं उतना ही चल रहा है. You're getting about between $800 and $900 a square foot पे आपको मिल रहे हैं घर. which is obviously, I mean, at its peak it was above 1,000, much above 1,000 in fact. But obviously वही मैं बोल रहा हूँ, about 15% correction आया है, 15% depending on how you look at it. So GVA is a little more insulated than GTA, I would say. Now let's look at this. So ये 25 billion का जो housing है, so only 7 billion is going to be for Build Canada homes. Okay, I'm glad to see that only 7 billion is going to go into, because the government has to build its own housing that it caters to the lower income strata जहाँ पे है. तो that is, ये तो बनता है 7 billion. अगर लग रहा है, अगर आप बोल रहे हो 7 billion,
each of these houses, चलो अगर आप लो इनकम के लिए बना रहे हो तो अगर आप 7 बिलियन डिवाइडेड, चलो 500,000 ही रखते हैं, you know, just for the sake of consistency. So I am seeing कि the government is going to be trying to build around 14,000 houses, which I think is a fair number. I mean, अगर ये सिर्फ लो इनकम और economically challenged लोगों के लिए आप घर बना रहे हो and you're going to try to build about 14,000 of those, I'm okay with that. But yeah, if you're going to try and build worth 25 billion, which was coming up to 250,000, I'm like, yeah, this is not your area. Oh, sorry, 50,000, then yeah, that's not your area. Tax measures 2 billion, ठीक है, वो तो बोला ही है कि under 1 million GST माफ, so fine. 16 billion existing programming. I'm not sure what that entails, because this is taking up about 80% of the 25 billion budget. So, I don't know what that means. Existing programming. Yeah, we'll have to look into this. ये थोड़ा सा alarming. I wouldn't call it alarming, but I think it needs to be explored a little further, because one of the things that Canada is suffering from is archaic zoning laws. And I want to know how much of this money is going to go into restructuring those. वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. Even if I do a quick search, right? Zoning. No results found. So zoning में इन्होंने कहीं पे भी mention नहीं किया है. Federal dollars invested will be leveraged to attract private capital. So they are going to advance mainstream. They're going to try and mainstream advanced methods of construction. Matlab advanced methods of construction, but okay, let's try and zoom into this a bit. ये थोड़ा interesting हो सकता है. चलो मैं आपको ये थोड़ा front and center करता हूँ. Homelessness, emergency shelter, transitional housing, supportive housing, community housing, affordable housing, market housing. So non-market, deeply affordable housing for low-income households. Okay. And then mixed income, non-market developments, serving range of households. And then you have market-led rental with limited affordability requirements. So it looks like the government is going to be involved in up to the community housing piece. I would personally say you can stop at supportive. Good supportive housing investments. Okay. Okay. Non-market. Yeah. So all the way to affordable housing. This is where I personally am a little scared. Because this is saying non-market. So matlab government. Non-market deeply affordable housing for low-income households. This is saying the government is going all the way to the affordable housing section. And then over here, the final leg is, okay, market housing. If all of this, starting emergency shelter, okay, sorry, अब मेरे को समझ में आया. So supportive housing, community housing and affordable housing में government आएगी. Transitional housing, emergency shelters, I think, okay, maybe not much more needed. That's why bridge supportive housing with provincial and territorial operating support. Okay. I would personally say कि supportive housing and community housing में अगर government है, with, I think that's fine. When it comes to affordable housing, ये थोड़ा gray area हो जाता है. What do you mean by affordable?
if you're saying affordable housing for low income groups, okay. For higher income groups, I think this should be primarily market driven. But then again, if I'm saying कि higher income के लिए market driven होता है, then let the private companies also build for the lower income strata, right? Because let the market decide the price. Because ये affordable housing में पता नहीं, ये मुझे थोड़ा सा concerning लग रहा है कि इसमें भी the government is going to get into the building of the house. But ठीक है, overall, since they have called out a complete section which will be market driven, I'm not too sad. But again, one thing I would have liked to see here is okay, how one thing I would have liked to see here is an emphasis on revamping zoning laws. यहाँ पे मैंने इसका कुछ देखा नहीं है, so that's a little it leaves me curious. Potential to cut building timelines by 50%, reduce cost by 20%, lower emissions. अब emissions तो ठीक है भाई, but 50%, if you're saying timelines by 50%, then I'm guessing this includes a review of the zoning laws. Otherwise, there's no way you can reduce the building timeline. So I'm guessing it's implied in a way, but we'll find out in time. चलिए आगे देखते हैं. By bringing down costs for Canadians. Of course, ये तो उन्हें बोलना पड़ेगा, even if they are saying कि costs कम होंगे, even if they are saying that they will be reducing government spending, they are also calling out the programs they will keep. I'm okay with all of them. Canada Workers Benefit, Canada Dental Care. ये dental care plan मतलब 5 million. यार अब आपने बना दिया है तो obviously you can't roll it back, but I always found it funny कि government dental care offer कर रही है. Dental care तो generally private insurance के उसमें आता है, so ठीक है. अब वही है, ये तो फिर वही है, अब जो पिछली सरकार ने कर दिया, अब इसको ढोके घूमना है तो क्या ही कर लेंगे. Cancel the divisive carbon price cutting prices by 18 cents per liter. Yes, I like that. Cut taxes for 22 million middle class Canadians. Saving two income family $840 per year. Man, थोड़ा ज़्यादा कर देते तो better होता. $840 में $840 में तो यार iPhone भी नहीं आएगा. But ठीक है, from an expenses perspective, that's actually not bad. Roughly speaking, that can be about a month and a half of groceries. So I'm not gonna take this lightly. अगर मुझे $840 मेरे बच रहे हैं, मैं उसको definitely मजाक में तो नहीं ही लूँगा. यूथ एम्प्लॉयमेंट ठीक है. Okay. Permanent to provide 400,000 allowing. See, I think if you focus more on cutting taxes, then something like this may not even be required. I mean, yeah, you should offer food in schools, but again, if parents have more disposable income, then they can always also chip in with their own snacks and everything. So it's a double-edged sword in that sense. Okay. Defense and security, fine. I'm not the most well versed in this space. Obviously, as a part of NATO, Canada needs to start meeting the 5% by 2035. That's the aim. So, okay, 30 billion.
and they have some timeline for it. I'm not the best person to comment on this, but I'm definitely appreciative of the plan over here to start getting more serious about protecting the country. So good, good for them. Um, Definitely needed. 1.3 billion border plan. I like this. Obviously, there's a large border with the US. You also want to cooperate with the US में उसे क्या कहते हैं यार, border services patrol जो भी है वो, you just have to basically also work with the US authorities to make sure कि कोई illegally US से भाग के Canada नहीं आ रहा है, and obviously कोई Canada से illegally भाग के US नहीं जा रहा है. So fully support the $1.3 billion border plan. To stop illegal guns, drugs, human smuggling before they reach our streets. Fine. Nice statement. Okay. I think, yeah, this brings us to the end of the budget document. I think आज लंबा हो गया. कल हम लोग रिव्यू करते हैं कि ये बजट एक्चुअली है कहाँ, because I'll also go over a little bit on how a budget is actually passed for the year and then how it actually makes its way across the executive branch of the country. तो मैं वो कल cover करूँगा along with some news. It'll be a very it'll be similar in format to what I've been doing earlier. मैं थोड़े बहुत articles highlight करूँगा and then I'll go over कि ये process क्या होता है. But anyways guys, thank you for today. आज थोड़ा लंबा हो गया, बट मेरे हिसाब से ये अति आवश्यक था कि हम बजट डिस्कस करें, बिकॉज दिस इज गोना अफेक्ट ऑल आवर लाइव्स. एवरीवन लिविंग इन कनाडा will feel this in a few months as we get into the year, as we get into next year rather, and we start seeing the government actually do the things it's promising. Obviously, with extreme global events, the budget is also claiming some very radical things, right? Kiki, they're trying to, I mean, I think I calculated 23 billion in operating deficit decrease in 1 year. ये सबको फील होगा किसी ना किसी तरह से. Most people will have a positive, most people will face a positive impact. Some people unfortunately will face a negative impact. इसमें, as I mentioned, there's no free lunch. So that's why I want to take the time to go over this in as much detail as possible. Obviously, I'm not the most decorated economist or anything, so some of my analysis could be is very lay person oriented, and then some of it I do have some knowledge from the past, so I'm trying to peel the layers of the onion. Anyway guys, have a great अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो have a great weekend and have a great Friday night everyone in Canada. Unfortunately the cold is here, winter has arrived, so yep, just stay warm, stay happy. Namaste everyone, bye.